कुंभ मेले की भव्यता और आध्यात्मिकता के बीच दमन और दीव सहित अन्य श्रद्धालुओं के लिए एक खास पहल की गई है। आचार्य संजय महाराज ने प्रयागराज में श्री धर्म सिंधु अन्न क्षेत्र में विशेष कुटीरों की व्यवस्था की है, जो श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक और प्राकृतिक शांति का केंद्र बन रही है। प्राकृतिक वस्तुओं से निर्मित ये कुटीर दमन दीव और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं। यहां हर दिन 250 से अधिक श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं और इस आध्यात्मिक माहौल का लाभ उठा रहे हैं। आश्रम में न सिर्फ रहने की उत्तम व्यवस्था है, बल्कि हर दिन कथा और विशेष पूजा और महाप्रसाद आयोजन भी किया जा रहा है। अब तक 5000 से अधिक श्रद्धालु यहां विश्राम कर चुके हैं। दमन दीव की प्रजा के लिए प्रयागराज कुंभ में दमन दीव के पांडाल का आयोजन किया है, जिससे आम जनजीवन की आम प्रजा के लिए कुछ व्यवस्था हो सके और आम प्रजा कहीं रह कर के कुंभ का दर्शन कर सके, कुंभ के लाभ को प्राप्त कर सके। भारतवर्ष की वैदिक विधा में कुंभ का अत्यंत महत्व है। ये भगवत कृपा का ही एक विषय है कि हम सबको दमन दीव के ऊपर भगवान कुंभराज की कृपा हुई, प्रयागराज की कृपा हुई और यहाँ पर प्रजा आकर के स्नान करके अपने आप को कृतकृत और धन्य महसूस कर रही है। इस वर्ष दमन के लोगों ने जितना उत्साह दिखाया, जितनी प्रजा यहाँ पर आई है, जितने लोग यहाँ पे आए हैं, उससे मेरा मन भी बहुत अत्यंत हर्षित है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है आपको बताते हुए कि आम जनमानस जो एक प्रसन्नता के साथ आता है कि हमारे दमन का एक पांडाल प्रयाग में है। गंगा मैया ने पावन धरती पर महाप्रयाग कुंभ में आज जो अमे अँ सनातन संस्कृति जो झलक जोई है ये अमने एवं लगे कि कंईक ने कि अमरा ऋषिमुनिओए अने अमरा जे पूर्वजों है जे कहता था कि कुंभ और महाकुंभ एनो अनुभव मैंने जोवा मळ्यो। आज मैं जे उत्तर प्रदेशना योगी मुख्यमंत्री ने मैं आभार मानु छूँ। तेमज अहीं जे संजय महाराज जी तेमज एमनी टीम द्वारा जे आयोजन करवामां आवेलुं लोको माटे रहेवानी व्यवस्था, जमवानी 2 टाइम नास्तो अने 2 टाइम जमवानुं खरेखर एटलो आनंद थाय छे। मारुं नाम निलेशभाई जगुभाई पटेल, दमण डुनेठा पटेल फड़िया। अमे बाय कार आव्या छे अहींया आ महाकुंभ में અને સરસ મજા આવી રહી છે। અહીંયા આજે જે સંજય મહારાજ દ્વારા જે આ પંડાલ નાખેલું છે દમણ સ્થિત, તો ખૂબ સરસ અહીંયા સેવા મળી રહી છે। જે ભક્તજનો આવે છે અહીંયા એ લોકોને સરસ 2 ટાઈમ ભોજન મળી રહ્યું છે અને ચાય નાસ્તો વગેરે બધું મળી રહ્યું છે। રહેવા માટે કુટીર મળી રહી છે, બધી જ સુવિધા છે। અહીંયા ચૌધરી છે, હું વેડછી સુરતથી આવું છું। અહીંયા અમે જે મહારાજને ત્યાં રહ્યા છે ત્યાં અમને અલૌકિક આનંદની અનુભૂતિ થાય છે અને ઘરે આપણે ડાઇનિંગ ટેબલ બેસીને જમીએ છીએ, પણ અહીંયા આપણને જે જમવાનો અલૌકિક આનંદ ને બધા સાથે બેસીને જમ્યા, સાથે બેસીને ત્યાં સત્યનારાયણની પૂજા કરી, સત્યનારાયણની વાર્તા સાંભળી અને ત્યાં ગુરુજીએ અમને આશીર્વાદ પણ આપ્યા અને બધે અલૌકિકનો બધો આનંદ આવે છે। હું સુરતથી આવું છું। આજે માધી પૂનમનું સ્નાન કર્યું। અહીંયા આવીને એટલું સરસ લાગ્યું। સોશિયલ મીડિયામાં જોઈને એમ લાગે છે કે અહીંયા ખૂબ પબ્લિક છે, લોકો પબ્લિકથી ડરીને આવતા નથી, પણ અહીંયા આવીને એવું લાગ્યું કે એટલી કઈ જાતની તકલીફ પણ નથી પડી અમને, રહેવાની જમવાની બધી રીતના એટલી સરસ વ્યવસ્થા છે। એટલે જ્યાં રોકાયા આશ્રમમાં એટલી સરસ રહેવાનું જમવાનું નેચરલી બધી રીતના એટલી સરસ સુવિધા પણ। પ્રયાગરાજમાં અમે આવ્યા તેનો આનંદ એટલા માટે થાય છે કે જે સાહિત્ય કરવા અમે આવ્યા ત્યાં અમને એક ભાઈ સંજયભાઈ મળ્યા અને એમના દ્વારા અમને સરસ રહેવાની જમવાની બધી જ સગવડ બહુ સરસ મળી। તેમાં અમને એટલો બધો આનંદ આવે છે કે જાણે અમે સ્વર્ગમાં આવી ગયા। બીજું કે સ્નાહી સ્નાન કરવાનો મને બહુ વખતથી ઈચ્છા હતી, એટલે લગભગ આ શરૂ થયો ત્યારથી તે મને મોકો મળ્યો। નામ કમુબેન, નાની દમણ ડાભલ સોમનાથ પુણ્યા ફર્યા। અમે વ્યવસ્થા કરીને એનામાં ખાના પીના ખાધું ને એવું કર્યું અમે એરિયા આ રીતે કુંભમાં ને અમને આ મોતિયા કરેલું એ બહુ ને મને બહુ ગમ્યું। મોતિયા કરેલું એટલે
જેવું તેવું નહીં કરેલું. દુનિયામાં કોઈ આજ લગી રાજાએ કર્યું નિમરે તેવું કર્યું ને તેવું અમે જોયું અમારી નજરે. આજ લગીમાં આટલી ઉંમરમાં 70 વર્ષની ઉંમરમાં મેં બહુ જોયું. આ બધું જોવાનું મળ્યું, નવું નવું જોવાનું મળ્યું અમને. आज महाकुंभ में आई हूँ। 3 तारीख को हम रवाना हुए थे, 4 को यहाँ आए हैं। आज हमको 9 दिन हो गए हैं। यहाँ नर्मदा शिव महापुराण कथा थी, महालक्ष्मी यज्ञ था। हमको बहुत आनंद आया, बहुत सुख की अनुभूति प्राप्त हुई। हम 3 बार त्रिवेणी संगम स्नान कर चुके, 2 बार गंगा स्नान कर चुके हैं। और यहाँ का रहना खाना पीना, यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मन विभोर आनंद से बिल्कुल तृप्त होके जा रहे हैं। आज हमारे जाने का समय है, मन नहीं हो रहा है पर फिर भी हमको जाना पड़ेगा इतने अच्छे तीर्थराज प्रयागराज को छोड़ के। उनकी व्यवस्था से बहुत खुश होके जा रहे हैं यहाँ से। और हमने 7 बार संगम में स्नान किया है। प्रशासन ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। यहाँ कोई पार्ट की लूटपाट कुछ भी नहीं है, हमारा नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। हम बहुत अच्छे खुश होके जा रहे हैं।